मटेरियल लीव्स ने बनाया, जो भी फूड प्रिपेयर किया, वो फूड जो है फ्लोएम के थ्रू जो है वन पार्ट ऑफ प्लांट टू अनदर वो पहुंचता है। इसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि इट विल ओनली ट्रांसपोर्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये जो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करे ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। सो वी कैन से दैट वाटर एंड मिनरल इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू जो है वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, वेयर फ्रॉम द सॉइल टू we can say through the xylem tissue only in the upward direction, sirf upward direction. Now what happened, first of all, water is absorbed by osmosis, okay, water is absorbed by the osmosis, and from then it moves to the xylem cell, okay, which is present in xylem tissue. क्या होता है, सबसे पहले वाटर जो है वो ऑब्जर्व होता है ऑस्मोसिस के द्वारा, ठीक है, एंड देन मिनरल इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड, देन दीज टू विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन थ्रू द जाइलम, ये जाइलम के थ्रू अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो दैट डे आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू वन टर्म दैट व्हेन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम रूट टू द लीफ, ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस of water and dissolved mineral salt from the root to the leaf, it is that is also known as, इसको क्या कहते हैं बताओ? Yes, one term I have used that day, transport of water and dissolved mineral salt from root to the leaf is known as, root से मतलब लीफ में ट्रांसपोर्ट होगा, उसको क्या कहते हैं? वाटर और डिसॉल्व्ड मिनरल सॉल्ट को जो ट्रांसपोर्ट होता है। Yes, anyone? Do you know the term ascent of sap? इसको मैंने उस दिन तुम लोगों को बताया था, ascent of sap, this word is ascent of sap, मैंने बताया था तुम लोगों को। It means what? It is the transport of water and minerals salt from root to leaf, root से लीफ की ओर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर और मिनरल्स का, किसके थ्रू? जाइलम के थ्रू, ठीक है। तो ये जो है इसको कहते हैं एसेंट ऑफ सैप, ये एसेंट ऑफ सैप कहलाता है। नाउ हाउ वाटर इज पुश्ड, कैसे वाटर पुश होता है? टू थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। व्हाट आर दोस टू थिंग्स? यस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, for transportation of water in the xylem tissue, two things are responsible. What are those two things? Tell me. कौन सी दो चीजें हैं जिससे कि वाटर ट्रांसपोर्ट होता है? कौन सा दो हम लोग डिस्कस किए थे? Anyone? मैम ट्रांसपोर्टेशन पुल, transpiration pull, that is, yes. And another one is, first one is the pressure due to which water is pushed into the xylem tubes of the root, that is called the pressure with which water is pushed into the xylem tube of the root. xylem के ट्यूब में जाएगा वाटर, उसको क्या कहते हैं? That is, that day I already explained to you people that it is known as root pressure. Two things are responsible. The first one is root pressure, पहला जो है उसको क्या कह दिए? It is root pressure, पहला जो है वो रूट प्रेशर है, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज ट्रांसपिरेशन पुल, दूसरा जो है वो है ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। these two are responsible for conduction of water, कि ट्रांसपिरेशन पुल जो है ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के लिए, ठीक है। व्हाट हैपेंस? First of all, the pressure with which water is pushed into xylem tissue, that is the root pressure, and the water, due to root pressure, water will move into the xylem tissue, but it is not enough for transportation of water in a very tall tree. Okay, water rises up in a very tall tree. Only root pressure is not enough. So there we people have discussed that transpiration pull plays very important role, because due to transpiration pull, what happens? Water rises up in a very tall tree. Name the tissue which is responsible. Name the tissue which is responsible for conduction of water and mineral. That is xylem, and another tissue is there which conduct the food material. That is known as phloem. Phloem.
Okay, now how the food material is transported through the phloem? We are talking about xylem. Xylem की अगर बात करें तो दो चीजों को हमने डिस्कस किया. Two things we people have discussed. The first one is root pressure, another one is transpiration pool. These two are playing very important role for conduction of water and mineral. Now, how food material which is prepared by the leaf that is transported to different part of the plant? Yes, anyone? कोई भी बताओ मुझे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है फूड मटेरियल का. इन द लीफ सेल सुक्रोज इज सिंथेसाइज्ड. ठीक है, लीफ सेल में क्या होता है, सुक्रोज का सिंथेसिस होता है. एंड ड्यू टू दैट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल इंक्रीजेस. क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सेल का बढ़ जाएगा. एज अ रिजल्ट वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग सेल इज फोर्स्ड टू फ्लो इनटू द लीफ सेल बाय ऑस्मोसिस. जो सराउंडिंग सेल का वाटर है वो लीफ सेल की ओर आएगा ऑस्मोसिस से. This causes sucrose to be translocated from one point of synthesis to the receiving end in the form of a solution. और इस तरह से सुक्रोज का ट्रांसपोर्टेशन होगा. ठीक है, दिस प्रोसेस इज डिपेंडेंट अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट. ये प्लांट के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि कहाँ ट्रांसपोर्टेशन होगा. ठीक है, मीन्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल लाइक सुक्रोज take place. How it is taking place? It is taking place by the process of osmosis. Okay, due to rise in the osmotic pressure. क्या हो रहा है जब लीफ जो है वो बताओ. कोई प्रॉब्लम है तो बोलो. ट्रांसपीरेशन पूल और रूट प्रेशर, ये दोनों, दिस टू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग ऑफ वाटर कॉलम इन ए वेरी tall tree in upward direction. No doubt it only transport in upward direction. Now second we are talking about translocation. See, translocation, this is the second term which we people have used. दूसरा जो टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं वो है ट्रांसलोकेशन. ओके, ट्रांसलोकेशन को जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट एंड अदर सब्सटेंस. यानी वाटर होगा, न्यूट्रिएंट्स होंगे और दूसरी चीजें होंगी, उसका ट्रांसपोर्ट होगा. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल वी कैन से, बेटर टर्म विल बी फूड मटेरियल. सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट टू अनदर. प्लांट के एक हिस्से से, कौन सा हिस्सा, फूड फैक्ट्री जो है वो लीफ है, तो एक हिस्से से जब दूसरे हिस्से में ट्रांसपोर्ट होगा फूड मटेरियल का, उस प्रोसेस को हमने कह दिया ट्रांसलोकेशन. दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन. नाउ व्हाट हैपेंस इन ट्रांसलोकेशन? जब ट्रांसलोकेशन में कैसे फूड मटेरियल, हाउ फूड मटेरियल आर ट्रांसपोर्टेड इन दिस प्रोसेस, कैसे इस प्रोसेस में फूड मटेरियल जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सेइंग दैट व्हेन द सुक्रोज इज सिंथेसाइज्ड इन द लीफ सेल, जब सुक्रोज बनता है लीफ के सेल्स में, ठीक है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल इंक्रीजेस. सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा. And as a result, water from the surrounding cell will force to flow into the leaf cell. जो surrounding cell का water है वो leaf cell में आने लगेगा. ठीक है, तो and then this